चैंटिंग का कई सारे आयाम हैं और कई उसके लाभ होते हैं। तो वो लाभ जो है वो अम, कई लोगों ने पहले भी, पिछले हफ्ते भी बताए लोगों ने। तो कुछ चैंटिंग ऐसी हैं जो इंस्ट्रक्टिव हैं, जो हम लोगों ने और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सूत्र पढ़ रहे हैं, कुछ नए हमने डाले हैं। सो पीपल आर नॉट रेजिस्टेंट टू रीडिंग देम, सो इट्स ए गुड थिंग। तो वो तो हमारे लिए रिफ्लेक्टिव चैंटिंग्स है। सो उसको अगर हम पढ़ते हैं, एंड at that time obviously it will be difficult for most people to reflect on that. So we read it mindfully, and when you do it again and again and again, the words get imprinted in the mind, you know. तो वो आपको चाय पीते हुए याद आ जाएगा कि अगर आप सुबह साधना के बाद चाय पी रहे हैं, कि आई एम अवेयर होमी क्या होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, मुझ में वैर रहता है यार, इस प्राणी के प्रति वैर है। So I think I should reflect, do something about it. And then the matter ends. It may just click. So in the beginning, even those chanting जो sharing of merits की हैं या मैत्री की हैं या ब्रह्म विहार की हैं, शुरू में अगर हम चैंट्स को करें और उसका मतलब समझ लें, वो बहुत आवश्यक है। उसके अर्थ को समझ लें, और फिर हम अगर सिर्फ चैंट भी करेंगे तो वो अर्थ हमारे पे इम्पिंच करने लगेगा। And धीरे धीरे we can then, once in a while we can use that as a practice also. Then for practice we have to slow down. When I say I am aware of me, then I actually check कि मेरे मन में कोई किसी के प्रति वैर है क्या, and if I find nothing, then go ahead to the next line. If I find something for a few moments, few seconds, better drop it. Why to carry the baggage? Then you go. अव्यापन दो होमी, कोई दुर्भावना है कि किसी के प्रति, विश इल फॉर एनीबडी? Okay, no, fine, good, very good. And if I have, let me drop it at least now for this time being. So if you, and this will of course have to do the one after having chanted it a few times and understood it, and you chant it again and again, then the words begin to hit. वैसे वो फर्स्ट टाइम किसी को हिट करें बहुत रेयर होता है। अगर पर्सन है स्ट्रॉन्ग धम्म संवेग एंड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, तो फर्स्ट टाइम भी हिट कर सकते हैं वर्ड्स। बट नॉर्मली फॉर पीपल इट इज हेल्पफुल इफ यू चैंट इट अ फ्यू टाइम्स विद मीनिंग। सो अगर हम मीनिंग पढ़ें और उसको याद रखें तो बहुत फर्क पड़ने लगता है। तो फिर हमको वो वर्ड्स हिट करने लगते हैं। खासतौर पे अथक प्रयास करना चाहिए, और मैं देखता हूँ मैं तो प्रयास नहीं करता, सकता है ये कुछ गड़बड़ है, मैं चैंट करे जा रहा हूँ और करता हूँ नहीं। then it begins to create a kind of, some kind of discomfort, वो कहते हैं ना उसके जो भिक्खु नैना रोतिका की किताब में, वो जो नैना पनिका की जो किताब है ना, हार्ट ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन, सती पठान, उसमें बड़ा सुंदर वर्ड यूज करते हैं वो, कि जब आप जान जाते हैं कि मेरे में राग है या द्वेष है, सिर्फ आप जान रहे हैं, and then when you do it again and again and you remember, then it creates a kind of inner repugnance. अंदर से लगता है यार कि कुछ करना चाहिए, कब तक मैं से राग जाग रहा जाता है नहीं, मैं उसको देखे जा रहा हूँ। कुछ करना पड़ेगा भाई, सिर्फ देखने से नहीं हो रहा है। then that inner repugnance itself acts as a stopping of it, and you just drop it off. तो इसी तरह से जब हम चैंटिंग मीनिंग समझ के करते हैं तो अंदर से it hits, the person is sensitive, it hits कि मैं क्या कह रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ, मेरे जीवन में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अनेगा होमी, आई बी फ्री फ्रॉम एंजाइटी, am I really free from anxiety? मैं तो इतना एंजाइटी में रहता हूँ। So then I should, it reminds me, हाँ कुछ करना चाहिए भाई। So then when you chant it even without practice a few times but understanding the meaning, then you begin to really get inner inspiration कि यार इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, and then you can really practice it. पहले समझ के, अब किसी कल्याण मित्र से समझ के करके, and then we can practice, then we can have a half an hour practice of the metta
as we used to do during last year's beginning part of the retreat. We do metta for 20 minutes, 25 minutes, and we do it gradually, and then some instructions are given. पहले अहम अवेरो होमी तो अपने लिए करेंगे, कैसे करेंगे, फिर दूसरों की बात कर रहे हैं, सब्बे सत्ता अवेरा होन्तु, then what does it mean, and दुखो होन्तु, सुखितो होन्तु. So all each and every word we actually do something about it in the mental firmament, हमारे अपने mental image बना के. और अगर विजुअलाइजेशन कर सकें किसी स्पेसिफिक आदमी को, किसी स्पेसिफिक रिलेटिव को, फ्रेंड को, we do that way. So those things really help us to understand the interrelationships in the cosmos, and you develop a real sense of metta. And I found that the sense of ill will and animosity, they all just disappear just by doing it repeatedly. Then हम अपने बाकी के जब spare time है, then these things, when you have chanted it few times, they begin to resonate and question. बैर रखते हो, खत्म करो ना यार, क्या रखा है? Why to carry the burden? And that's how the practice really strengthens. So these kind of reflective chants and even chants of metta, they are such powerful chants, that if we do it with understanding, they will begin to click. जहाँ जहाँ कमी होगी वहाँ वहाँ वो क्लिक करेंगे कि ये भैया इसमें कुछ कमी है. जैसे धर्म का अथक प्रयास मैडम ने बार बार सुना, तो उनको लगा मैं प्रयास में थोड़ी ढीली हूँ, तो चलो, मैं तो कहते ही आ रहा था कहीं बहुत लंबे समय से, but reciting it so many times had its own effect, So these are really very valuable things, and these have therapeutic effects. Actually, if a person is in deep depression, very sad, and छूट गई, सब कुछ छूट गया, chanting छूट गई, and you suddenly click on it, and somebody helps him to click, it can take him out of depression. I've seen it happen. As late as last year, I went to Jammu to talk to my uncle who passed away 10 days back. They were in extreme depression because of this death of the son and COVID. When he was not talking to anybody, he had given up all puja, everything. So obviously he will get more and more depressed. So I just took him by hand and said, let's go to your puja room, and said, nahi, mujhe nahi karni. So I just sat it and opened the book, because all our Kashmiri chants are Sanskrit chants of this Adi Shankara, Abhinav Gupta. They're very profound chants. So once you start doing them slowly, pehle to bilkul kya kehna chahiye? Unwillingly. You start unwillingly, then slowly, he gained that fervor. And then by the time about half an hour, kitna hum baithe honge, he was a different person. I could see that his next day he stayed, and he was so thankful to me कि यार तुमको मेरे को बेटा ले गए, बहुत अच्छा किया, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था. No, that was just simple chanting, nothing else. And that reciting the qualities of Shiva, or qualities of those qualities are absolutely Dhammic qualities which we expect them. And then the person comes out of such a strong therapeutic effect. When people sometimes, because of certain situations, we get into extreme difficulties and forget everything, then those chantings lift up our mood. If you chant, if a person is ill, then he can able to chant Sakkatva Buddha Ratanam Osadam Uttamam Garam Hitang Deva Manussanam Buddha Tejena Sutthina Nasantu Paddava Sabde Dukkha Upasamentu Te. You can say Dukkha Upasamentu Me. And you say it from heart to relieve your suffering. I can assure you. It's a powerful thing. That's what a Dhammic suggestion is. It's not positive thinking, it's a Dhammic suggestion. We have the confidence in Buddha, Dhamma and Sangha. तो भगवान जब कहते हैं कि बुद्ध को याद करके, धम्म को याद करके, संघ को याद करके भय छूटेगा, दज्जग सूत्र में कहा जाता है, हमने दज्जग सूत्र भी चांट किया था. So it's a fact. You have to just do it and see for yourself that it is true. In deep adversity, hospital में पढ़ा रहा था कई बार, I just sit quietly, and no fear, nothing happens.
just we become grounded in the reality. So if one can really, in adverse situations, if these chantings are remembered, that's what point I wanted to make. If you remember these small, small effective chantings, Metta, Satta, Sakkatva, or parts of, Karuna Chanta, which you say, Vachsa, Mansa, Chaiva, Vadami, Tathagata, they're so powerful, they'll just uplift you. आप किसी के प्रति कोई बीमार है उसके प्रति करुणा का चैंट करुणा भाव प्रकट करना चाहते हैं so just by sitting quietly and say may you be free from suffering it's good but if you chant these words along it is just like a dynamo of energy which comes out of it when you say te sang satchena silena khanti metta valengate te pitamina rakhantu arogya sukhena cha that has a meaning it just makes you you know energized, the chanter is energized and the effect will be very powerful, definitely. So these chantings are very strong in benefits, really, if we do them properly. And I think it's very good that Bhanteji has been systematically having more and more people do it and taste the benefit of it. It's really highly praiseworthy. Thank you, Bhusa. Thank you. कोई अगर कुछ कहना या पूछना चाहे, then we have a few minutes. Thank you, Bhusa. मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। धज्जक सूक्त का जब पाठ हो रहा था तो धज्जक सूक्त को मैंने दो तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करा। एक तो मैं जो आजकल फ्लैग्स होते हैं उनको देख करके क्या मैं फील करती हूँ वो मैं थोड़ा सा देखना चाह रही थी, और दूसरा ये कि क्या मैं फियर जो, क्योंकि मेरे में बहुत फियर की बहुत अधिक है मात्रा, तो उसका इम्पैक्ट मेरे फियर पे कैसा, मतलब मैं क्या फील कर रही थी उस वक्त। तो मुझे लगा कि काफी उससे इट हैज बेनिफिट इन द सेंस कि मैं चैंटिंग या मैं उसको सुनती भी हूँ तो भी मुझे आई कुड रिलेट दैट कि इट्स जस्ट नॉट द फ्लैग ऑफ एनी स्टेट और एनी जैसे उनमें 3 राजाओं का नाम लिया गया था और फिर उसके बाद में देन बुद्धा धम्मा एंड संघा के लिए बोला। सो दैट एक आप में श्रद्धा भी आती है और दूसरा आप मतलब मुझे जो मैंने लगा कि मेरे को भगवान बुद्ध से मैं रिलेट कर पा रही थी या मैं उस फियर को देखने की एक शक्ति मुझे थोड़ा सा मेरे को लगा कि थोड़ा सा that I could have. So that's it. धज्जक सूक्त का खास तौर पे I don't know, I should maybe I can share it. I remember long back एक प्रश्न शिविर हो रहा था, मेरे कोई 2 young साथी शिविर कर रहे थे and there was a turmoil in this शिविर because of certain sadhika who was experiencing something which are out of this world. तो मुझे बुलाया गया and then I found कि जो धम्म सेविकाएं हैं they are all totally frightened and कहते हम तो जा रहे हैं. So then I said, okay, we'll sit. I called them. We went to separately after the sitting to a meditation hall. And I played this Dhajjaka Sutta and chanted with them. And little bit of meaning. I don't remember whether I explained the meaning really. But I just played that shit chanting. And it was so powerful, In that particular case, probably the confidence in the Buddha, Dhamma, or whatever, it had so much effect that the fear reduced substantially in actual working condition. जैसे धज्जक सूत्र की जो last few lines है ना, if you just have that devotion in a good measure, उसमें एक starting जो end में जो भगवान summary करते हैं ना, अरण्य रुक्ख मूले वा शून्यागारे वा भिक्खवो
अनुसरेथ बुद्धम भयम तुनहा कनोसिया। भिक्षु अगर जंगल में पेड़ के नीचे या शून्यागार में जाते हो तो संबुद्ध का स्मरण करने पर तुम्हें भय नहीं होगा। If one has a devotion and confidence in Buddha, these words, act like a balm. That Buddha is saying, chant it, chant the name, and you say, Iti piso bhagava arahan samma sambuddha. That he's telling you that you do it. When he's saying in his own words, do it, better do it. And see for yourself. So if the saddha is there, then these things work miraculously, actually. That's the power of the words. If you see that, and if you have that sensitivity, I've always found it works so well, so well. So, for example, when we sleep for a long time now, we both of us chant something before we sleep. We chant, you say, Sakkhatva or Abhay Parittam or just Bhavatu Sabba Mangalam, or depending on the situation. So many situations arise in the householder's life, and it just settles down and peaceful sleep. No issue. Even if there is turmoil all around your family, something grave has happened, which has been troubling you throughout the day, you chant at night and with utmost devotion, and it settles down and you don't get difficult sleep. I haven't had a problem of sleep, but it's pretty helpful. You get to a mind state which is very quiet and happy. So it's suggested, whichever you like, take anything. Just chant, but how much time it takes? 2 minutes or 3 minutes at the most, that's all. Before sleep, when I sleep, I have to put some medicines and eyes, this, that, and then just chant. About 5 minutes, 3 minutes, and then go to bed, sleep. And it helps so much. You can try it out and see.